So third quarter final match about to begin. First ball from Vishal to Ashish. On the way, first ball, Vishal to Ashish. First ball, short pitch ball, top edge, goes near the fine leg region. Fielder, one bounce to the fielder. Ashish is off the mark along with his team with this single in this third quarter final match. Next ball, nicely bowled, goes near the deep mid-on region. Alpesh Kene, the captain, is also off the mark with this single. 2 balls bowled, 2 runs on board. Third quarter final match update. Next ball goes near the square leg region. Fielder is too deep. Nicely fielded. One bounce back to the wicket keeper just for a single. Nice fielding near the square leg region, deep square leg region. Vikas was the fielder. Nicely fielded by Vikas. Kept the batsman down for just a single. Next ball played near the square leg region again. One bounce, 2 bounce to the fielder. In between a bit of fumble resulting in 2 runs. Nice running between the wickets by Ashish. Score moves on to 5 runs. 4 balls bowled, 5 runs on board without a loss of wicket. Score update of Machine Assembly 11 playing against Maintenance Warrior. This time nicely played by... And what a running catch! What a catch! What a catch in the deep! Vishnu is the fielder, a diving catch in the deep. There goes the first wicket of Machine Assembly. Alpesh is the batsman, captain batsman out and back to the pavilion. This is the catch of the season, I will say. Not the catch of the match, but the catch of the season. One important announcement for Vishnu for taking this absolutely blinder catch. Rupees 1000 from Kiran Kapsesan. He came running down and took a diving catch in the deep. What a catch! In this crucial third quarter final match. The next batsman in is veteran senior most batsman of Machine Assembly, Swapnil Agine. Let's see what he can do for his team now.
Next ball to Swapnil Agine, and what a running catch again! Second running catch. What a catch! Karthik this time is the fielder in the leg side. What a catch again! One more wicket down of Machine Assembly in this crucial quarter-final match, third quarter-final match. Without troubling the score, Swapnil Agine is the batsman, out and back to the pavilion. That brings the end of the first over. After the completion of 1 over, score of Machine Assembly 11 is 5 runs for the loss of 2 wickets, playing against Maintenance Warrior. अगले बैट्समैन आए हैं क्रीज पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर, वो है कपिल. स्ट्राइकर एंड पर है आशीष. बॉल बहुत ही अच्छी लाइन और यहाँ पर एक और विकेट का पतन होते हुए आशीष बोराडे भी आउट होकर पवेलियन लौटते हुए दूसरा ओपनिंग बैट्समैन भी आउट हो चुका है. द थर्ड विकेट डाउन ऑफ मशीन असेंबली 11. Seven balls bowled, 5 runs on board for the loss of 3 wickets of Machine Assembly 11 playing against Maintenance Warriors. मैदान में जो लड़ा वही असली खिलाड़ी है. मैदान में जो लड़ा वही असली खिलाड़ी है. जीत हार तो बस वक्त की सवारी है. Next ball nicely played by Rakesh. New batsman Rakesh goes near the deep mid-on area. Rakesh is off the mark with this single. Team score moves on to 6 runs in 8 balls for the loss of 3 wickets. Fourth quarter final match toss update. ASB turning versus Swarajya 11 Mold Assembly. I request both the teams captain to come near the commentators box for the toss of next match. In between, a nicely bowled ball by Bhanudas, a dot ball to Kapil. Next ball. Again Bhanudas to Kapil. Kapil hits it near the mid-wicket region. Fielder is too deep. Nicely fielded. Again Karthik. Just for a single. Back to the bowler. In 10 balls, they have made just 7 runs for the loss of 3 wickets. Next ball, played near the covers region. 1 bounce to the fielder. Nice shot by Rakesh, but 1 bounce to the fielder in the deep. Just for a single again. 11 balls bowled. 8 runs scored for the loss of 3 wickets. Next ball down the offside, missed by Kapil, a dot ball. That brings the end of the second out. After the completion of 2 overs, score of Machine Assembly 11 is just 8 runs for the loss of 3 wickets. Just 8 runs. What a performance by Maintenance Warriors. Hello.
बल्ला बोले तो दिल धड़कता है, बल्ला बोले तो दिल धड़कता है, हर शॉट पर तिरंगा चमकता है। Bowler is final over will be bowled by bowler is it Hello, Vishnu? hello. Vishnu is the bowler. Rakesh will face the next ball of Vishnu. Third over. Taken on the full by Rakesh. One bounce over the head of two fielders. Mid-on fielder and mid-wicket fielder chasing it, goes over the head of the bowler. There she goes for a four from the bat of Rakesh. आसपी सर, जब तक राकेश देशमुख क्रीज पे है, तब तक मैच का कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। राकेश देशमुख कभी भी असेंबली में पहली बार ओपनिंग में आता था, पहली स्टार्ट में, आज वो थोड़ा सा लास्ट में आया है, लेकिन राकेश देशमुख के ऊपर अभी पूर्ण भरे दारोमदार। जरूर गणेश, देखते हैं अभी अगले बॉल में क्या करते हैं राकेश अपनी टीम के लिए। इस बार डाउन द ऑफ साइड बॉल था, डॉट बॉल, कोई इशारा नहीं यहां पर अंपायर का, एक डॉट बॉल। अच्छा कमबैक यहां पर विष्णु का राकेश के लिए बाउंड्री मारने के बाद। कटाले चेंडू हा, परंतु समजू नाही, परंतु मिस हो थ्रो इथे 2 धावा पूर्ण धावसंख्या त्या 14। अंपायर का यहां पर इशारा आते हुए गणेश लेग बाय के 2 रन ऐड होते हुए। शेवटच्या चेंडू आता 3 चेंडू शिल्लक, शेवटच्या होते 3 चेंडू शिल्लक। चांगला स्कोर उभारायचा असेल तर राकेश देशमुखला ते इस बार पॉइंट रीजन में खेल दिया है राकेश ने, वहां पर डीप में फील्डर तैनात है, जब तक फील्ड कवर करेंगे। राकेश 2 रन लेना चाहते थे, अच्छा थ्रो, 1 ही रन मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑन बिहाफ ऑफ स्पोर्ट्स टास्क फोर्स राजेश गुप्ता सन को ग्राउंड पे वेलकम करते हैं, और ऑन बिहाफ ऑफ स्पोर्ट्स टास्क फोर्स विनोद भगत सन को भी वेलकम करता हूं मैं ग्राउंड पर। अगली बॉल विष्णु की कपिल के लिए, मारने की कोशिश है, जगह पे ही रह के मारने की कोशिश कर रहे हैं, जज नहीं कर पा रहे हैं। एक डॉट बॉल, इस अहम मुकाबले में अपने टीम के लिए ज्यादा रन नहीं ले पाए कपिल। देखना है आखिरी बॉल में क्या करते हैं कपिल। केवल 15 रन हुआ है टोटल, 17 गेंदों में 15 रन। इन जस्ट 17 balls they have made just 15 runs. Last ball on the way. ये इस बार मार दिया एक्स्ट्रा कवर रीजन में, वहां पर अच्छी रनिंग कैच हो सकती है। कैच ड्रॉप का नतीजा, बैट्समैन 2 रन के लिए क्रॉस करते हुए, और इस 2 रन के साथ अपना टोटल स्कोर बनाया है 17 रन। Now maintenance warrior will require 18 to win of 18 balls, a low total match. Let's see how Machine Assembly 11 will come back. 18 to go, 18 to win.
फिर अभी क्या एक मैच चालू है तो सबका ही टीम करना पड़ा, वैसा हुआ। चलिए ये भी दिया है बात, तुम सही भी पहुंचा, स्वराज 11 मोड असेंबली पहुंचा है। अच्छा ये बार ऐसा है, साइड पिच पे कर रहा है। लिया। अरे बहुत बार बोलता, मुंह लगाता है माइक को, मुंह लगा के फाड़ देता है पूरा। मुंह लगाता है माइक को, मुंह लगा, इसके लिए वो पकता है। क्या बनाया? थैंक यू किरण। अच्छा बनाया, मस्त बनाया। हम लोग ने डाला ना फर्स्ट टाइम का, थोड़ा बोला किसी को ना, खाली राइस गया, किसी को खाली मसाला गया, ऐसा सब हुआ। तो ये अच्छा बनाया, अच्छा किया, अच्छा बनाया। लो टोटल बनाने के बाद मशीन असेंबली की टीम अपनी फील्ड सेट करते हुए क्या इस थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच में रुका पाएगी मेंटेनेंस वॉरियर जैसी टीम को? केवल 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। देखते हैं कौन बॉलिंग लेके आता है पहली ओवर। ओपनिंग बैट्समैन पर आ चुके हैं मेंटेनेंस वॉरियर की तरफ से। स्ट्राइकर एंड पर है भानुदास, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है विष्णु। और देखना है बॉलिंग लेके कौन आ रहा है। गणेश बॉलर अल्पेश है का? टीम के कैप्टन अल्पेश केने पहली ओवर लेके आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। क्या डिफेंड कर पाएंगे? केवल 18 रनों का टोटल। लेट्स वेट एंड वॉच। थोड़ी देर में रन चेस शुरू होने जा रहा है। कैप्टन अल्पेश केने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, शॉर्ट विकेट कीपिंग करते हुए सीनियर मोस्ट विकेट कीपर बैट्समैन स्वप्निल अगिने। फर्स्ट बॉल ऑन द वे। पहला ही बॉल फुल टॉस था, मिस कर दिया विकेट कीपर ने। थर्ड मैन डिवीजन के गेंद जाते हुए देखना है क्या होता है। अंपायर का इशारा वाइड +2। 3 रन पहले ही बॉल में ऐड हो चुके हैं। विदाउट ए बॉल 3 रन हो चुका है। रन चेस शुरू हो चुका है यहां पर। अगला बॉल डाउन द लेग साइड मारना चाहते थे और एक वाइड बॉल। विदाउट ए बॉल रन चेस में 4 रन हो चुका है। मेंटेनेंस वॉरियर run chase without a ball, 4 runs on board, chasing a low total of 18 runs. Already 4 runs on the board without a ball being bowled, as both the balls were wide balls. This time
What a nice shot from the batter, Banudas. A reverse sweep goes for a 4. Banudas is off the mark with this boundary. What a shot. Team score jumps on to 8 runs. 1 balls bowled, 8 runs on board. What a shot from Banudas of Maintenance Warrior, chasing a low total of 18 runs. In just 1 ball, already 8 runs made. This time placed near the point region for a single. Score moves on to 9 runs of just 2 balls. In 16 balls, they need to make 9 runs now. 16 to go, 9 to win. What a shot! Up and gone! Huge 6 from the bat of Vishnu this time. Score jumps on to 15 runs. Now they just require 3 runs to win this match. They will try to finish in first over itself, I think. Only 3 balls have been bowled. They need 3 runs to win. Tries to hit it again down the leg side, a wide ball. Maintenance Warrior are just 2 runs short of victory. In the first over itself, just 2 runs short of victory. A slower ball being bowled this time. Nice comeback by Alpesh. A dot ball. Rajesh, balls please, balls. 2 to go umpire, 2 to go. 4 balls bowled. 2 to go. This time a dot ball. 5 balls bowled, 16 runs made by Maintenance Warrior without a loss of wicket, chasing a total of just 18 runs. Can they finish in this last ball of first over? Let's wait and watch. Next ball. And what a shot! What a huge shot! 6 from the bat of Vishnu. Maintenance Warrior through to the next round, semi-finals. In the first over itself, they have won this match quite comfortably. What an all-round performance with the bat, with the ball, and with the fielding as well from Maintenance Warrior.